हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा बट बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ एंड द वीडियो इज़ बेस्ड ऑन टू टर्म्स Inscape and Instress. So before I start with, please like, share and subscribe my channel. Inscape and Instress. These two terms were coined by M.Hopekins. M.Hopekins एक विक्टोरियन पोइट थे एंड ही वॉज नोन एज द मोस्ट इंडिविजुअल विक्टोरियन पोइट, क्योंकि वो बिल्कुल ही डिफरेंट मैनर में लिख रहे थे बाकी विक्टोरियन से. टू योर सरप्राइज आई मस्ट शेयर कि उनकी जो पोइट्री है वो इट वॉज पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ एंड इट वॉज आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऑफ हिज डेथ दैट इट वॉज पब्लिश्ड इन 1918. His famous works are Pied Beauty, The Windhover, and there are so many other poems. So let's move on to the idea of Inscape. Inscape refers to the particular feature of a landscape or a natural structure. अगर हम landscape की बात करते हैं तो we have different types of landscapes. Around us, we have mountains, we have plains, we have plateaus. If we talk about natural structures, though landscapes are also natural, but despite landscapes, we have different things around us, including we people. हम लोग भी natural structure हैं. So, how do we look different from others? हम एक दूसरे से कैसे different दिखते हैं? This idea of Inscape is based on another theological belief that God never repeats himself. And it's true that God never repeats himself. We have millions of things around us, but none of the things match each other. We have a quality, we have a unique thing in us that makes us different from others. So this uniqueness, this distinctiveness is called Inscape. ये हमारे अंदर जो ये क्वालिटी है, ये नेचुरल स्ट्रक्चर्स के अंदर ये जो क्वालिटी है जो उनको दूसरी चीज़ों से डिफरेंट बनाती है, that is actually Inscape. If we talk about a minute thing, even a very small insects of the earth, on the earth, they are different from other insects. It means they are unique to them. Unique means जिनके जैसा कोई नहीं है. And this is how we recognize them. So this is called Inscape. Now let's move on to Instress. Instress is actually a complementary term to Inscape. ये एक actual experience है Inscape का. ये एक्चुअली एक वे ऑफ रिकग्निशन है हाउ रीडर रिसीव द थिंग्स थ्रू हिज सेंस ऑफ इमेजिनेशन, थ्रू हिज साइट और थ्रू हिज मेमोरी. सपोज मेरे सामने एक चीज़ पड़ी है, मैं उसे कैसे याद रखूँगी कि वो दूसरी चीज़ से कैसे डिफरेंट है. वो यूनिकनेस एक्चुअली है क्या जिसके थ्रू मैं उस चीज़ को याद रखूँगी. अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो किसी चीज़ का यूनिक होना उसके किसी फीचर पे डिपेंड करता है. अब सपोज कीजिए मेरे सामने देर आर 10 पीपल इन फ्रंट ऑफ मी, बट डिस्पाइट बीइंग दे हैव सेम अपीयरेंस लाइक 2 eyes, 1 nose, we have 2 hands, 2 legs, still we are unique from each other. हम रिकग्नाइज कर सकते हैं कि एक दूसरे से अलग कैसे हैं. सो हॉपकिंस वॉज ऑफ द बिलीफ दैट ये पोइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रीडर्स के सामने इस तरह की इमेजेस लेकर आए, इस तरह अपनी इमेजेस को प्रेजेंट करे कि रीडर उनको उसी तरह से परसीव करे जैसे कि वो उन्हें, जैसे कि पोइट ने फील किया और उन्हें रीडर के सामने लेकर आया. द आइडिया ऑफ Inscape इज सिमिलर टू स्पॉट्स ऑफ टाइम ऑफ वर्ड्सवर्थ, moments of Ralph Waldo Emerson and epiphanies of James Joyce. For example, if a poet is presenting a horrorful image
than a reader should utter from his mouth. Really, it is very bad. There should be some horrorful expression on the face of the reader. So this is how Inscape and Instress work. So I have tried my best to explain the terms. I hope you must have understood. Thank you. Thank you so much.